Hello friends, welcome to Adda 247, the official YouTube channel of bankers and SSC You are watching the day 3 or the session 3 of the special session called the Crack Ippb Pre in 5 days. My dear aspirants, today we're going to discuss odd one out questions and also a question of Parajumble. तो मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा आज इस सेशन 3 या डे 3 में इस पर्टिकुलर सेशन के जिसका नाम है Crack IPPB Pre in 5 days. आज देखो जो हमारा सेशन 3 या डे 3 है इसमें जो है हम लोग सॉल्व करेंगे ऑड वन आउट के कुछ क्वेश्चंस रादर और साथ ही में जो पैराजम्बल होगा उसका भी एक क्वेश्चन देखेंगे. सो आई होप दैट आप लोग जो है अपनी तैयारी पूरे जोर शोर से कर रहे हो और बहुत कम समय रह गया वैसे एग्जामिनेशन के लिए. सो विदाउट मच अडू लेट्स हैव अ लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन. ओके देखिए तो आपको जो है यहाँ पर ऑड वन आउट के हम लोग क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे. तो फर्स्ट 4 क्वेश्चन आर गोइंग टू बी ऑफ ऑड वन आउट एंड देन लास्ट वन वुड बी अ पैराजम्बल. ऑलराइट, सो हियर्स द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन ओवर हियर. तो क्वेश्चन नंबर 1 में जो है दिया हुआ है ए एंड बी यहाँ पर दिया हुआ है और बाकी का जो 2 सेंटेंस है वो आपको नेक्स्ट स्लाइड पे दिखेगा. ठीक है, आपको ये बताना होगा इन सभी सेंटेंसेस को समझने के बाद कि कौन सा जो है ऑड वन आउट है या इनमें से कौन सा सेंटेंस कितने सेंटेंस ऑड वन आउट है. ऑलराइट, सो अब देखिए जो आपका स्टेटमेंट ए उसमें लिखा हुआ है ना, इट्स रिटन ओवर देयर. In these centuries there were important advances in the aesthetics of nature. All right, तो देखा जाए तो अगर हम सेंचुरीज की बात करें, ठीक है भाई, तो देखो वहाँ इस हाल ही में अगर सेंचुरीज की बात करें 100 सालों की रेंज में बात करें तो जो है बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट हुआ है कुदरत की खूबसूरती को निखारने में. वैसे ऑलराइट, निहारने में रादर, इंक्लूडिंग द इमर्जेंस ऑफ द कंसेप्ट्स ऑफ डिसइंटरेस्टेडनेस एंड द पिक्चरेस्क्यू. यानी कि इनफैक्ट बेसिकली जो कुदरती की जो खूबसूरती है उसको सिर्फ मटीरियल एस्पेक्ट से नहीं ऑलराइट बल्कि निहारने के सेंस में भी समझा गया है. एज वेल एज द इंट्रोडक्शन ऑफ द आइडिया ऑफ पॉजिटिव एस्थेटिक्स. ऑलराइट, तो बेसिकली इन खूबसूरती जो नेचर में है उसको प्रिजर्व करने की बातें भी करी गई होगी. तो दैट्स द पॉजिटिव एस्पेक्ट. सो इन दीज सेंचुरीज, इन द पास्ट फ्यू सेंचुरीज, देयर वर इंपॉर्टेंट एडवांसेस ऑलराइट इन द एस्थेटिक्स ऑफ नेचर. दैट मींस यू कैन से in beauty in the what do you say you can say the way of expression of beauty of nature rather, including the emergence of the concepts of disinterestedness and the picturesque. So not only consider the part that can actually earn you money, but actually from the internal feeling as well as the introduction of the idea of positive aesthetics has also been there. Now coming up to statement B, it's written over here. Although environmental aesthetics has developed a subfield of philosophical aesthetics only in the last 40 years. हालांकि देखो अगर हम बात करें तो जो पर्यावरण की जो एस्थेटिक्स है, जो पर्यावरण की जो सुंदरता है, ये जो है फिलोसफिकल एस्थेटिक्स का एक हिस्सा सबफील्ड बना है पिछले 40 सालों में ही. ऑलराइट, इट हैज हिस्टोरिकल रूट्स इन 18th and 19th century एस्थेटिक्स. लेकिन बेसिकली जो 18वीं और 19वीं सदी की जो एस्थेटिक्स है ऑलराइट, इसका जो रूट है आपका एनवायरमेंटल एस्थेटिक्स का, ये उतना पुराना है. ऑलराइट, इसकी जड़ें उतनी पुरानी है. सो ऑल्दो environmental aesthetics has developed a subfield of philosophical aesthetics, all right, only in the last 40 years, in the last you can say in the last 4 decades, but it has historical roots in the 18th and 19th century aesthetics as well. That means environmental aesthetics has, and you can say that environmental aesthetics had got their roots in, has got its root in the historical roots in the aesthetics from, you can say, the 18th or the 19th century as well. Now let's have a look at statement C and D. Okay, the next one please. Now see, in C over here is written, thus by the end of the 18th century, there were 3 clearly distinct ideas, each focusing on different aspects of nature's diverse and often contrasting moods. यानी कि 18वीं सदी के अंत होते होते, और देखिए बेसिकली 3 तरह के जो आइडियाज थे वो निकल के आ रहे थे और ये तीनों जोर देते थे कह सकते हैं आप प्राकृतिक डाइवर्सिटी की, अलग अलग खूबसूरती के चीज़ों पे. ऑलराइट, so thus by the end of the 18th century there were actually 3 clear distinct ideas, and these ideas focused on the different aspects of nature's diverse and often contrasting moods. All right, now coming on to statement D, it says these notions continue to play a role in contemporary work in environmental aesthetics, especially in the context of its relationship to environmentalism. So these notions are basically these ideas. ये जो ideas थे, जो अलग अलग ideas थे, ये जो है
अब भी बहुत महत्व रखते हैं और अब भी जो है कि एक रोल प्ले करते हैं उस कंटेम्प्रेरी काम में बेसिकली। और इनफैक्ट जो कह सकते हो आप इन्वायरमेंटल एस्थेटिक्स है, ऑलराइट, इन्वायरमेंटल बेसिकली जो इन्वायरमेंटल एस्थेटिक्स है उसमें ये 3 आइडियाज अब भी रोल प्ले करते हैं, और स्पेशली जब हम बात करें इन्वायरमेंटलिज्म की। ऑलराइट, सो दीज आइडियाज, द 3 आइडियाज दैट वी सॉ इन स्टेटमेंट सी, they still continue to play a role in contemporary work in the environmental aesthetics, especially in the context of its, you can say, the relationship to environmentalism. So you saw statement A, B, C and D, and now it's the time to have a look at the question. And the question is, next one please. Okay, see, you got 5 options over here. Option A says only A, option B says A and B, option C says only C, and option D says only D, option E says none of the above. You have to tell me that which of the statements of A, B, C, D were actually odd one out. All right, and you got approximately 30 seconds to give me your answer, and your time starts now. Hurry up. I want all of you to answer the question. Hurry up. 15 seconds more. Try. All of you can answer. Which is the odd one out? Well, the time is up, but in case you guys tuned it a little late, you can still keep on answering, by the way, because I want most of you, in fact, not most of you, I want all of you to answer, because that'll actually, make it really interesting. Well, now it's the time for having a look at the answer, but I think, agar hum dekhein, if we just consider statement A, B and D, they were the talk of aesthetics over there, and when you talk about statement C, it was more focused around ideas. So might be the statement C is the odd one out. Let's have a look at the answer, and the answer is yes, it is C that says only C. Kyun? Because dekho, when we talk about A, B or D, there was actually a mention of aesthetics. However, nothing as such was there in statement C. तो अगर हम बात करें aesthetics की, तो आपका A, B और D में वो मिलेगा, लेकिन C में aesthetics की कोई बात नहीं की गई थी, और इसीलिए जो C है, देखिए, ये जो है, ये odd one out था. Alright, तो उम्मीद करता हूँ कि पहला क्वेश्चन आपको जो है अच्छा लगा होगा, आपने सही स्कोर किया होगा. अब देखते हैं, let's have a look at the next question. Now, here's the next question for you, my dear aspirants. Statement A says, but the loss is not only theirs. यानी कि जो नुकसान है वो सिर्फ उनका नहीं है, लेकिन exactly बात क्या हो रही है ये नहीं पता अभी हमको यहाँ पर. Okay, B में दिया हुआ है, unless disadvantaged racial groups are integrated into mainstream social institutions, they will continue to suffer from segregation and discrimination. यानी कि जब तक जो है ऐसे रेशियल ग्रुप्स ऑलराइट, मेनली जो है जो नीग्रोस के और सब ग्रुप्स होते हैं, प्राइमरली जो ब्लैक्स होते हैं, उनकी शायद यहाँ बातचीत करी जा रही है, और ऐसे बहुत सारे ग्रुप होते हैं जो कि अभी भी आदिवासी टाइप के होते हैं और वो जंगलों में रहते हैं, ऑलराइट, उनको ठीक से सोशल इंस्टीट्यूशन में जो है, सामाजिक इंस्टीट्यूशन में अभी भी उनको जगह नहीं दी गई है. तो जब तक जो है उनको प्रॉपरली इंटीग्रेट नहीं किया जाएगा, उनको प्रॉपरली जगह नहीं दी जाएगी, उनको वो सेपरेशन से हमेशा जो है सफ़र करेंगे, और साथ ही में उनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन भी की जाएगी, उनके साथ भेदभाव भी किया जाएगा. सो अनलेस disadvantaged racial groups, primarily we're talking about some blacks over here, and unless they are integrated, they are brought into the mainstream social institutions, the mainstream social organizations, they will constantly suffer from segregation, that's your separation, and also discrimination as well. Now, let's have a look at statement C. Statement C over here says, current affirmative action debates have lost sight of the ideal of integration as a compelling moral and political goal. So, अगर देखा जाए, देखो अभी हाल ही में जो एक्शन हुए हैं, और इनफैक्ट एक्शन डिबेट्स जो हुए हैं, ये हाल ही में जो एक्शन डिबेट्स होते हैं, ये इनका जो मतलब इनका जो नज़रिया है ना, उनके नज़रिए से इंटीग्रेशन में बेसिकली किसी को जोड़ने का जो सेंस होता है, वो बिल्कुल आइडियल, जो बिल्कुल प्रॉपर आइडियल था, कि जिस चीज़ को हम मद्देनजर रखते हुए लोगों को जोड़ना समझना चाहते थे, इंपॉर्टेंट रखना चाहते थे, ये सभी जो है वो एकदम जा चुका है. फिर भले ही वो मॉरल आइडियल क्यों ना रहा हो, और इनफैक्ट पॉलिटिकल गोल क्यों ना रहा हो, बिल्कुल भी ये सब नहीं आता है उसमें. So current affirmative action debates have actually lost sight, they have actually lost sight of the ideal of integration, all right, of the ideal of connection as a compelling moral and political goal. Now, let's have a look at the next one, and the last sentence is D. It is high time that institutions of higher education forthrightly defend this ideal in its own right. So, most probably it's going to be the ideal of integration.
सो इट इज, अब देखो बहुत समय हो गया है, इनफैक्ट बहुत समय क्या हो गया, रादर समय आ चुका है इंस्टीट्यूशंस के लिए, सोशल इंस्टीट्यूशंस के लिए कि बेसिकली, और ऐसे इंस्टीट्यूशन जो कि हाई, जो उच्च शिक्षा प्रदान करते हैं, कि उनको जो है इस आइडियल को, मेरे ख्याल से इंटीग्रेशन का जो आइडियल था उसको जो है डिफेंड करने का, उसको प्रॉपर मौका देने का. सो इट इज हाई टाइम दैट इंस्टीट्यूशंस ऑफ, इट इज एक्चुअली a lot of time has been passed, a lot of time has been lost rather, that social institutions of higher education forthrightly defend this ideal of integration in its own right. So my dear aspirants, you got 30 seconds to tell me that which of the statements of A, B, C and D were actually odd one out. Alright, so and you got approximately 30 seconds for giving me answer, and your time starts now. Hurry up. Ten seconds more. Hurry up, my dear aspirants. Quickly, give me your answer. Okay, well, most of you are going for D. Okay, let's have a look at the answer, and the answer is D. Yes, only D. So ultimately, when we talk about D, it is actually pretty different from all of the ideas, because initially we were talking about integration and a lot about that. All right. However, in statement D, it is high time that institutions of higher education forthright defend this ideal of integration, but how this particular word wasn't mentioned very clearly, and in fact the theme of statement D was pretty different from other statements as well. So that's why D is the correct answer, and yes, all of you have, in fact most of you have chosen it correctly. Yes, it's going to be D. Now let's have a look at the next question. उम्मीद करता हूँ कि आपका जो स्कोर है वो बड़ा होगा. You would have increased your score, you would have increased your accuracy as well. And now it's the next question in front of you. So question number 3 says, statement A says, not long ago, the world's main worry was that people had too little to eat. बहुत, हालांकि ये बहुत समय पहले की बात नहीं है, बस कुछ समय पहले तक ही जो पूरी दुनिया थी उसकी जो मुख्य चिंता थी वो ये थी कि लोगों के पास खाने के लिए बहुत ही कम राशन है, बहुत ही कम चीज़ें हैं, बहुत ही कम सामान है, जो खाद्य प्रोडक्ट है वो बहुत कम है. सो नॉट लॉन्ग अगो, दैट मीन्स until recently, just a few time ago, just a few, in fact, yes, a few years ago, in fact, little time ago or a few years ago, the world's main worry was that people had too little to eat. All right, that's the first statement in statement A. Statement B says, in an age of plenty, individuals have the luxury of eating what they like. लेकिन बेसिकली देखा जाए अब वो समय आ गया है जब हमको आसानी से सब कुछ बहुत ज़्यादा मिल जाता है, प्लेंटी हमें मिल जाता है, और इनफैक्ट और अब हमारे लिए हम क्या खाएं क्या ना खाएं ये हमारे लिए एक लग्जरी की बात होगी. हमें जो पसंद होगा, जो स्वाद में पसंद आएगा, वो उस हिसाब से हम लोग उसको खा सकते हैं. ऑलराइट, सो इन एन एज ऑफ प्लेंटी, परहैप्स दिस इज एक्चुअली एन एज ऑफ प्लेंटी बिकॉज अ लॉट ऑफ एग्रीकल्चर हैज इंप्रूव्ड. इन फैक्ट अ लॉट ऑफ नॉन एग्रीकल्चरल डिशेज आर आल्सो देयर फॉर अस टू हैव you can say to have rather. So individuals have the luxury of eating now whatever they like. Now statement C says, persuading children to eat vegetables is hardly a new struggle, nor would it seem to rank high on the list of global priorities. All right, अब देखा जाए तो देखो, बच्चों को सब्जियां खिलाना ये जो है कोई नई परेशानी नहीं है, ये सदियों से परेशानी आती जा रही है. ऑलराइट, लेकिन हाउएवर ग्लोबल प्रायोरिटीज़ में जो है ये इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता, यानी कि जो कह सकते हो आप, जो वर्ल्डली प्रायोरिटीज़ हैं उनको बहुत इंपॉर्टेंस नहीं, उनमें बहुत इंपॉर्टेंस नहीं मिला है परस्यूइंग चिल्ड्रन टू ईट वेजिटेबल में. Okay, so persuading children to eat vegetables, or rather pushing children to eat vegetables, is actually not a new struggle. Alright, it has been there since ages, but still, nor would it seem to rank high on the list of global priorities. Alright, so it doesn't have it doesn't have a really quite high rank on when it comes to the list of global priorities as well. Now let's have a look at statement D, and statement D says, yet America, for all its libertarian ethos, is now worrying about how its citizens eat and how much exercise they take. Alright, तभी भी देखो, तब भी जो है अमेरिका में जो है ये एक परेशानी की बात हो गई है कि वहाँ पर कुछ बेसिकली कह सकते हो आप, आज़ादी कुछ ज़्यादा ही है कंजम्पशन को लेकर,
और लेकिन अब भी उनको इस बात की चिंता है कि आज़ादी तो है और इसलिए हम ये इस बात को लेकर वो लोग चिंतित हैं कि उनके जो सिटीजन्स हैं वो एग्जैक्टली कितना खा रहे हैं, और राइट, और साथ ही में कितनी एक्सरसाइज भी कर रहे हैं ताकि वो जो खा रहे हैं वो प्रॉपरली यूज़ कर पाए, जो है उनसे उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे. सो येट अमेरिका फॉर ऑल इट्स लिबर्टेरियन ethos actually, you know, because देखा जाए तो most of the westernized food, all right, actually most of the westernized food actually they come from USA itself. So yet America for all its libertarian ethos is now worrying. Actually they are worried about how their citizens are eating, in fact, and plus also the thing is that, you know, how much exercise are their citizens considering or doing. So this is what that's going on in statement D, and now it's your turn to tell me that what is in your sense an odd one out over here. Was A, B, C, D, which one was actually odd one out? And you got approximately 30 seconds to give me an answer, and your time starts now. Hurry up. All right, it seems like your time is up, by the way, and all of you are actually participating. It's really good to see. अगर कुछ problem आ रही है आपके end पे, there might be some sort of an connection problem on your end. No issues, you can just reload the page, ठीक है? और अगर हमारे यहाँ कुछ हो रहा होगा तो our techies will take care of it right away. So, yet America for all its libertarian ethos, it was the last statement, and now it's time for having a look at the answer, and the answer is A. That says only A. Because अच्छा, अब थोड़ा सा पीछे जाते हैं. Let's go back to the previous slide as well. ओके, अब देखो बाकी जो स्टेटमेंट्स हैं, अगर बाकी हम स्टेटमेंट्स में देखें तो हमेशा आपको एक चीज़ मिलेगा कि अल्टीमेटली द प्रॉब्लम इज नॉट अबाउट फूड नॉट बीइंग अवेलेबल, द प्रॉब्लम इज बीइंग अबाउट व्हाट शुड वी ईट. स्टेटमेंट बी, स्टेटमेंट सी, स्टेटमेंट डी, ये तीनों स्टेटमेंट्स इसी के अराउंड थे. ऑलराइट, कि बेसिकली प्रॉब्लम ये नहीं है कि खाने को नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि क्या खाएं एग्जैक्टली, किस तरह का खाएं. ये जो चीज़ थी ये बी, सी एंड डी प्रेवलेंट थी, लेकिन स्टेटमेंट ए में ऐसा नहीं था. And that's why this is the odd one out over here. So that's the reason why it's the answer. And now let's have a look at question number 4. तो चलिए चलते हैं अगले सवाल पे. Okay, here's the next question for you, my dear aspirants. Moreover, for most nations, government debt is projected to grow relative to income for years to come. तो बेसिकली देखा जाए तो इनफैक्ट जो ज़्यादातर देश है, जो ज़्यादातर नेशंस हैं, उनका जो सरकारी कर्जा होता है वो बढ़ता ही जाता है उनके इनकम के संदर्भ में. ऑलराइट, इनफैक्ट वो आगे बढ़ता ही जाएगा जब भी उनका इनकम के संदर्भ में, जब भी हम आगे के सालों की बात करते हैं तो. सो मोर ओवर, दैट मीन्स दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट इज एक्चुअली इन एडिशन टू अ प्रीवियस स्टेटमेंट. सो मोर ओवर, फॉर मोस्ट नेशंस, फॉर मोस्ट ऑफ द नेशंस, द गवर्नमेंट डेट is projected to grow relative to income for years to come. All right, so that's the funda over here. Now coming down to statement B, it says the popularity of austerity policies has waned over the past several years thanks to evidence that it may have been counterproductive. All right, so many such policies, देखो ऐसी बहुत सारी policies जो कि austerity किस्म की policies थी, ठीक है, और उनकी जो पॉपुलैरिटी हुआ करती थी अब वो ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में उनका कुछ खास असर देखने में आ नहीं रहा था. इनफैक्ट वो नेगेटिव हो गई थी, काउंटर प्रोडक्टिव हो गई थी, यानी कि जो उनका असर था वो उसका उल्टा असर दे रही थी. द पॉपुलैरिटी ऑफ ऑस्टेरिटी पॉलिसीज हैज एक्चुअली वेन्ड ओवर. ऑलराइट, सो इट डजंट एग्जिस्ट एनीमोर. इट हैज डिक्रीज्ड अ लॉट इन द पास्ट सेवरल years thanks to evidence, and it has waned over, and thanks to evidence, the clear evidence that shows that such policies are actually counterproductive. They don't really give they don't really give a result that actually is desired. So statement C says it is important to remember that there is an absence of evidence that government with their own currencies are too indebted. All right, in fact, अब ये जो मेन बात है, जो एक बहुत अहम बात है, वो ये याद रखने वाली बात है कि एविडेंस जो है, देयर इज बेसिकली एविडेंस नहीं है. और इस चीज़ को समझने के लिए कि सरकार जो है वो अपनी करेंसी को लेकर ही काफ़ी इंडेटेड है, वो काफ़ी कर्जे में है. सो इट इज़ इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट देयर इज एन एब्सेंस ऑफ एविडेंस. सो देयर इज नो सच एविडेंस दैट गवर्नमेंट विद देयर ओन करेंसीज आर एक्चुअली
too indebted. All right, well, see, that's the thing. Now, let's have a look at statement D as well, and the statement D is, but many are still worried by the fact that relative to national income, government debt is now larger in many countries than at any point since World War II. So that means approximately the time period of 1939 to 1945. So देखा जाए तो अभी इनफैक्ट बहुत सारे जो लोग हैं वो इस चीज़ को लेकर काफ़ी चिंतित है कि देखा जाए ज़्यादातर जो सरकार हैं उनका जो उनका डेट है, जो उनका कर्जा है उनके नेशनल इनकम के संदर्भ में, वो सबसे ज़्यादा हो चुका है अब वर्ल्ड वॉर 2 से लेकर अब तक के समय में. Okay, so but many are still worried about the fact that relative to national income, the government debts are now now larger actually in many countries than at any point since World War II. So so the World War II, that means the time period of 1999 to 1945. So since that time, the debt is now really larger of almost any government. So that's the point over here. Now, you have to tell me that which of the statement A, B, C, and D was actually the odd one out, is actually the odd one out in your view, and you got approximately 30 seconds to give me your answer, and your time starts now. Hurry up. Okay, 15 seconds more, hurry up. Well, I suppose here are the options. There are only A and B, only C, only D, or none of the above. Now it's at the time we're having a look at the correct answer, and that is only C. That means it's only C. Now, why is it so? Let's have a look at the previous slide, please. Okay. अब देखो, ultimately C में दिया हुआ है, it is important to remember that there is an in absence of evidence that government with their own currencies are too indebted. Now, when we have a look at all the other statements, all right, the other statements, it's more like, having the government debt policy and everything, all right, and we are talking about some sort of austerity policies as well. और काफ़ी साल से हम लोग देख रहे हैं. So basically the common factors over here are, you can say, several years or several time period in the past few years. When we're talking about statement A, B and D, all right, mostly the common factor over here is several years. But when you come down to statement C, there's no such factor over here, and that's why this is the odd one out. And that's the reason why statement C is the correct answer. I hope कि आप लोगों ने सही जवाब दिया होगा. चलो अब देखते हैं हम लोग फाइनली जो लास्ट क्वेश्चन है आज का, एंड लेट्स हैव द लास्ट क्वेश्चन, एंड हियर इट इज. वेल, सो एक्चुअली देखो, दिस इज एक्चुअली अ रीअरेंजमेंट जो कि आपको अरेंज करना है, और मैं इसके लिए आपको देने वाला हूं 1 मिनट. तो 1 मिनट तक आपके पास समय है, आप आराम से इसको देख करके पढ़ो, समझो, और फिर मुझे बताओ कि इसका आंसर क्या होगा, एंड देन आई विल गिव यू द आंसर एंड आल्सो एक्सप्लेन द रीअरेंजमेंट. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. हरी अप, 1 मिनट. $45 seconds left to solve. Hurry up. Last 30 seconds, quickly. Okay, 10 seconds more. Quickly, my dear. What's the correct order? Okay, I'll give you 30 seconds more. Come on, hurry up. $15 seconds more. What's the answer? Well, the time is up, and now I suppose we must have a look at the answer, and the correct arrangement is
ACBED. All right, so that's the correct statement. That is the correct logic over here. Now, why is it so? Let's have a look at the question first. Let me just explain it to you. Now, अब देखो जब हम ए की बात करते हैं तो ए में दिया हुआ है एरिस्टोटल बिगिंस हिज ट्रीटीज ऑन मेटाफिजिक्स विद असर्शन दैट ऑल ह्यूमन बीइंग्स हैव द डिजायर टू acquire knowledge. So perhaps just some sort of you can say that, that Aristotle actually, he began his treatise on metaphysics. Actually, it's not treatise, it's treatise. So treatise on metaphysics with the assertion, all right. So basically he assumed rather, so with the assertion that all human beings have the desire to acquire knowledge, to gather knowledge, all right. Statement B says, as evidence, Aristotle cites the delight rather that we take in sense of perception and in particular in vision. So perhaps statement A and B doesn't quite connect over here. As evidence, Aristotle cites the delight that we take in perception. All right, statement C says, by this he means that we value knowledge for its own sake entirely apart from its utility. Yes. अब देखो स्टेटमेंट ए में उसने ये कहा था कि ह्यूमन बीइंग्स हैव द डिजायर ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, यानी कि जो इंसान होते हैं उनको नॉलेज गैदर करने की इच्छा होती है. और स्टेटमेंट सी में अगर देखो तो दिया हुआ है, बाय दिस he means that we value knowledge for its own sake. यानी कि स्टेटमेंट सी में देखो दिया हुआ है कि हम अहमियत देते हैं ज्ञान को, नॉलेज को, ऑलराइट, इस पर्टिकुलर सेंस. दैट्स व्हाई स्टेटमेंट ए एंड सी कनेक्ट राइट अवे. नाउ कमिंग डाउन टू स्टेटमेंट डी, इट सेज हिज टीचर Plato, ऑलराइट, he expressed the delight in vision in a still more radical way in Symposium by attributing it to a demonic force eros. ऑलराइट, तो बेसिकली जो यहाँ पर जो प्लाटो थे उसने अपनी खुशी जाहिर करी लेकिन एक रैडिकल वे में रादर, और इन द सिम्पोजियम बाय एट्रीब्यूटिंग इट टू अ डेमोनिक फोर्स इरोस. ऑलराइट, तो बेसिकली उसने जो है एक डेमोनिक फोर्स इरोस से इसको जोड़ दिया सिम्पोजियम में. ऑलराइट, अच्छा ई में देखें तो ई में दिया हुआ है द सेंस दैट डिस्क्रिमिनेट्स द लार्जेस्ट नंबर ऑफ इंटेलिजिबल फॉर्म्स. अब देखो यहाँ पर हमें थोड़ा जाना पड़ेगा पीछे की ओर. स्टेटमेंट बी में देखो दिया हुआ है, एज एविडेंस एरिस्टोटल साइट्स द डिलाइट दैट वी टेक इन सेंस परसेप्शन. अच्छा, अब देखो ए एंड सी कनेक्ट हो गया बिकॉज ऑफ नॉलेज. अब स्टेटमेंट सी में देखो जो उसने कहा था, दैट वाज बाय दिस ही मीन्स दैट वी वैल्यू नॉलेज फॉर इट्स ओन सेक एंटायरली अपार्ट फ्रॉम इट यूटिलिटी, यानी कि उसकी यूटिलाइजेशन के उसको अगर हटा दे तब भी हम लोग नॉलेज, ज्ञान बेसिकली हमें मिलता है तो हमें अच्छा लगता है, और अच्छा लगता है तो बेसिकली इट्स अ प्लेजर व्हेन वी गेट नॉलेज. ऑलराइट, सो अल्टीमेटली इस पर्टिकुलर प्लेजर के सेंस को उसने बी से जोड़ा है जिसमें दिया हुआ है, एज एविडेंस एरिस्टोटल साइट्स द डिलाइट दैट वी टेक इन सेंस परसेप्शन एंड इन पर्टिकुलर इन विजन. ऑलराइट, तो देखो बी में यानी कि ए और सी जुड़ गया और सी के बाद देखो बी कनेक्ट हो रहा है यहाँ पर जब हम बात करें बेसिकली सेंस परसेप्शन की, और इस बी को कंप्लीट किया है यहाँ पर जब आपका स्टेटमेंट ई देखे तो. अब देखो वहां बात हुई सेंस परसेप्शन की और वही चीज यहां मेंशन है, इट्स आल्सो देयर इन स्टेटमेंट सी, स्टेटमेंट ई एज वेल. सो ए एंड सी गॉट कनेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट perception of sense, perhaps that's the one that connects statement B and statement E. So that's why it should be after A and C. That means A, C, B, E, these have been aligned so far and the only one left, that's D, and that's why D will come at the end. So the correct यहाँ पर order है वो यही है A, C, B, E, D, और आप में से कई सारे लोगों का यही यहाँ पर आंसर भी देखने को मिला है. तो आप लोगों का स्कोर कार्ड भी देख के मुझे खुशी हो रही है. 6 and 9, 2 on 5, अच्छा 2 on 5 तो थोड़ा सा इंप्रूव करना पड़ेगा काजल मैडम आपको. प्रिया मिश्रा, यू नीड टू इंप्रूव अ बिट एज वेल. नो इश्यूज. देखो आज थोड़ा सा टफ सेशन था, आई नो, बिकॉज ऑड वन आउट इज नॉट दैट इजी. तो दैट्स द थिंग, बट डेफिनेटली अगर आप लोग डेली प्रैक्टिस करते रहोगे तो आई एम प्रीटी श्योर दैट आपको जो है आसानी से मिलेगा. 3 on 5 is by Priyanka, that's very good. Sonu Kumar scored 3 and 5. देखो today, considering the level of questions today, I'd say that any of you who has scored 2 and 5 or above has actually done a good job, because today the questions were really tough. All right, and in fact if you can score 2 on 5 and above in today's session rather, I think you will be able to score really well in the examination. ठीक है, तो definitely चिंता मत करो. आज थोड़ा मैंने टफ क्वेश्चन एक्स्ट्रा दिए थे आपको, तो खैर अगर आप लोगों ने 2 on 5 and above अगर आप लोग पा गए हो तो it's a very good thing. So now, okay, sir, I am having problem with RC. Please RC का सेशन करवाइए. Yes, Tanya Guha. All right. Tomorrow you will have your session on reading comprehension. Then we'll have tomorrow. तो बेसिकली आपको कल एक सेशन मिल जाएगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे भी, तो आप लोग बिल्कुल चिंता मत करिए. सो आई होप दैट यू गाइज वर एबल टू स्टडी वेल इन टुडेज सेशन. आई वोंट से एंजॉय बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ यू weren't able to get the correct answer. No issues. See, the thing is, it was actually pretty tough today. No issues. चलो, आप लोगों ने मेहनत करी है, that's a very good thing.
Now, it's finally the time for bidding you adieu. I hope कि आप लोगों ने अच्छे से पढ़ाई करी और आप लोग डेली अच्छे से पढ़ाई कर भी रहे हो, बिकॉज देखो IPPB का एग्जाम जो है वो बिल्कुल सर पे आ चुका है। और कोई आपसे ये कहे लुक तुम्हारे पास तो टैलेंट है, यू आर टैलेंटेड इनफ, सो यू नीड नॉट वरी, उस चीज पे विश्वास मत करना, ठीक है। टैलेंट है अच्छी बात है, लेकिन यू नीड नॉट वरी, इसकी चीज विश्वास नहीं। देखो बिकॉज यू विल हैव टू वर्क हार्ड। नाउ व्हाई आई एम सेइंग सो, बिकॉज हार्ड वर्क डिफीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डजंट वर्क हार्ड, ठीक है। तो बेसिकली जो कठिन परिश्रम होता है ना, वो टैलेंट को हरा सकता है अगर टैलेंट ने कठिन परिश्रम नहीं किया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बात यहां पर समझ गए, एंड दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू वर्क वेरी हार्ड, एंड प्लस एट Adda 247 we are always concerned with your success. Thank you.